Hello students, welcome back to our chemistry channel. I'm Abhijit sir, your ultimate chemistry mentor, and I'm always there to give support throughout your board, NEET, JEE, JEE Advanced and other competitive exams. The current chapter is chemical bonding and molecular structure, and in our previous lecture, we have studied about what are the limitations of Lewis octet group and what are Lewis acids and what are Lewis bases. And today I'm going to discuss regarding covalency and oxidation state and what is the basic difference between covalency and oxidation state. Okay, so let's get started. Write down covalency. What is covalency? Covalency is the number of unpaired electrons. It is the number of unpaired electrons present in the outermost shell of an atom, either in ground state or in the excited state. Meaning होची गोटे एटम रो outermost cell रे केताटा number of unpaired electrons present अछंती either in its ground state or in its excited state. That number of unpaired electron is called covalency of that atom. Okay, so write down the definition. It is the number of unpaired electrons. It is the number of unpaired electrons present in the outermost cell It is the number of unpaired electrons present in the outermost shell of an atom. Either in ground state or in the excited state. Either in ground state or in the excited state. What is covalency? It is the number of unpaired electrons present in the outermost shell of an atom, either in ground state or in the excited state, right? So, take examples of phosphorus. Right? The first examples for phosphorus. What is the atomic number for phosphorus? What is the atomic number? The atomic number of phosphorus is 15, right? And its electronic configuration is 3s2 and 3p3. Its outermost shell electronic configuration is 3s2 and 3p3, right? So let's find out the number of unpaired electrons. The number of unpaired electrons present in its outermost shell. देखो it is outermost shell अच्छी 3s orbital तो it electron paired equation ठीक है तो आपको हमें unpaired electron में count करिया नहीं एठी जो तीन इलेक्ट्रॉन अच्छे आपनकर 3p orbital रे ये तीन इलेक्ट्रॉन अच्छे आपनकर unpaired electron right. So the number of unpaired electrons present in the outermost shell of phosphorus is 3. It is 3. Then what is its covalency? Its covalency is also 3, right? The number of unpaired electrons present in the outermost shell of phosphorus is 3, and thus its covalency is also 3. As covalency is the number of unpaired electrons present in the outermost shell, that means covalency is equal to number of unpaired electrons present in the outermost shell. So for phosphorus, number of unpaired electrons is 3, and hence its covalency is also 3. So covalency CV is equal to 3 for phosphorus atom. In its ground state. Look, एठी कौन अच्छी कि ये उसी तरह third cell, and third cell contains 3 orbitals, 3s, 3p, and 3d orbitals. Okay, so ये उसी 3s orbital, ये उसी 3p orbital, and here 3d orbital. 3d orbital is also there, which contains 0 electrons. ये कितना electron contain होता 0 number electron contain होची 3d orbital. ready देखो d orbital नो d generation होची 5,
ठीक है, and it contains zero electrons in case of phosphorus. अरे phosphorus इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल ही सॉरी d ऑर्बिटल पर्यंत ଯିବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି। ओके, तो ସେଥିପାଇଁ p ऑर्बिटल पर्यंत ତାକୁ लिमिटेड ରଖାଯାଇଛି and d ऑर्बिटल ଅଛି vacant जेहेतु एनर्जी डिफरेंस ଅଛି। ओके, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି excited state ଦେଖିବା, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ electron only can get excited within the same cell। आपको मन रखिए इलेक्ट्रॉन को हमें जितेबाला भी एक्साइट करूछंती ताको केवल सेम सेल में ही एक्साइट करियो। दैट मींस जदि सेम सेल रे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट अछि देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन गेट एक्साइटेड। ओके, वी कैनॉट excite electrons from one cell to another cell। बुझुछ नहीं, गोटे सेल रो आ गोटे सेल को इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाटा नॉट दैट इजी। ये बहुत अधिक एनर्जी रिक्वायर करे गोटे इलेक्ट्रॉन को गोटे सेल रो आ गोटे सेल को एक्साइट करबा ପାଇଁ। बट हमें चाहिए परिपरिया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करि परिबा विद इन द सेम सेल रे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करि परिबा। आप माने कि चलନ୍ତୁ एक एग्जांपल मानतु मोर घरे गोटे वैकेंट रूम अछि, ठीक अछि, जदि मोर घरे वैकेंट रूम अछि तो मोर जोटा वर्तमान रो घर अछि जेटी वर्तमान मो लिविंग रूम जोटा वर्तमान जो बेडरूम अछि माने तो से रूम मते खाली शॉर्टेज पड़ुछि और माने माने कि चलନ୍ତୁ कि से रूम मते सफिशिएंट होनी। तो मु चाहे कौन करी मु चाहे मोर आउट रूम जोटा वैकेंट अछि सेटी शिफ्ट हे करी हां नहीं ना एमती कि मोर रूम शॉर्टेज पड़ुछि और मोर स्पेस दरकार पड़ुछि मुझे कि नेबर घर रहबी, इज इट पॉसिबल? अरे नेबर घर जे कि कोन रहि कि नहीं रही कोठी मो निजर घर वैकेंट थिले, निजर घर वैकेंट थिले गोटे रूम रो आ गोटे रूम को शिफ्ट हवा इजी। बट जदि मो नेबर घर वैकेंट अछि जदि मो सेठी शिफ्ट हवा कथा भाबी ताले माडा पड़े। बुझि पछ ना नेबर घर को जदि रात्रि जे कहबी कि मत रहिବାର अछि से कोन करियो मारियो ना मते, ठीक अछि। से ये से वाला कांसेप्ट तो सेल सेल रहे इलेक्ट्रॉन ओनली कैन गेट एक्साइटेड, ठीक अछि। Cell between cell electron excitation is not that easy। Electron excitation same cell possible नहीं। Electron only can get excited if vacant orbitals are present within the same cell। Same cell ଭିତରେ ଯଦି vacant orbital ଅଛି then only electron can get excited, or else electron excitation from cell to cell or between cell is not feasible। Okay, normal condition में it is not feasible or even extreme condition में भी feasible नहीं। It requires high energy, ठीक है, बहुत अधिक एनर्जी दरकार। देखंतु इडे देखंतु ये सब सेम सेल अछि, थर्ड सेल ऑर्बिटल्स अछि एंड थर्ड सेल में वैकेंट ऑर्बिटल भी अछि। तो एठी जेतेबेले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि आमे चाहिए एठो इलेक्ट्रॉन को एठी के एक्साइट करै परियो, इज ना। हां आउट डेंस मन रखंतु जदि मैं कहबा व्हाट द कोवेलेंसी इज 3 देन हमें कौन से एग्जांपल नहीं करिवा जोटी फास्फोरस रो कोवेलेंसी 3 मन रखितांतु कोवेलेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये नंबर ऑफ बॉन्ड ऊपर डिपेंड करे, ठीक अछि। कोवेलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जदि कोवेलेंसी अछि 3 तले बॉन्ड केते आसीयो 3। तो मते कोन तो फास्फोरस को कंडीशन में तीनटा बॉन्ड बनेछि। एग्जांपल कौन एग्जांपल है को एग्जांपल्स कौन देखो PCl3 इन PCl3 फास्फोरस पाखरे केते बॉन्ड अछि, तीनटा बॉन्ड अछि एमती। इट वाज PCl3 जोटी फास्फोरस बने अछि तीनटा बॉन्ड 1 2 3, ठीक अछि। सो इट्स कोवेलेंसी इज 3। यदि के अपनो क्वेश्चन पछलियो व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस इन PCl3 and what will be its covalency? It is 3, it is 3। ओके, आउ कोन एग्जांपल ले करियो को आउ कोन एग्जांपल ले करियो जोटी फास्फोरस रो कोवेलेंसी 3 PH3 करियो ने देखो PH3 भी करियो PH3 एडी
phosphorus covalency 3. Then like a bond, it is similar. In the H phosphorus bonded with 3 hydrogen atoms. Here phosphorus is bonded with 3 hydrogen atoms. तो এই কেসে আপনারা কই পারিবে কি ফসফরাস র কোভ্যালেন্সি হচ্ছে 3 আর মনে রাখন্তু এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট it is the ground state for phosphorus atom phosphorus atom ର ground state जोठी vacant d orbital present ଅଛି but এটা হচ্ছে ground state মানে electron excitation field okay it contains 3 unpaired electrons in its ground state that's why the covalency of phosphorus in its ground state is 3 and 3 covalencies bond बनेछि कौन molecule examples अछि जेमति PCO3 PS3 इस molecule रे phosphorus तीनटा bond बनेछि in PCO3 3 bonds with 3 chlorine atoms in PS3 3 bonds with 3 hydrogen atoms okay तो ये होछि phosphorus in its ground state देखो जब हम phosphorus इलेक्ट्रॉन को excite करेगा if electron get excited from 3s orbital to 3d orbital. If electron get excited from 3s orbital to 3d orbital, मतलब इट गोटे इलेक्ट्रॉन एटी एक्साइट करियला ठीक अछि ड्यू टू गेन ऑफ सर्टेन एनर्जी और किसी एनर्जी से गेन करिथि इलेक्ट्रॉन को s orbital रो d orbital को एक्साइट करियला ओके यदि इलेक्ट्रॉन एटी एक्साइट हबो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन से हो 3s2 से गोटे इलेक्ट्रॉन पड़ेगा वाला गोटे इलेक्ट्रॉन 3s1 राइट इट इज होगा 3p3 3d0 थिला ES0 3d1 और ES0 देखा था कोवेलेंसी के तो 3s1 गोटे इलेक्ट्रॉन दुईटा तीनटा चारटा पांचटा इलेक्ट्रॉन ठीक अछि तो देखा टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते आसला तो इटा होची एक्साइटेड स्टेट राइट इट इज द एक्साइटेड स्टेट इट इज द ग्राउंड स्टेट देखा टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसला 5 देखा एडी थिला केते 3 और कोवेलेंसी थिला केसे 3 एग्जांपल ले लेबे यार एक ऐसे एग्जांपल थिला के मॉलिक्यूल में PCO3 ES3 एटसेट्रा एमटी मॉलिक्यूल रे सब फॉस्फोरस बने तीनटा बॉन्ड ये सेकंड केस देखु छिना हमें फॉस्फोरस केस रे तो ये होजे फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट तो फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट रे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन actually 5 that's why its covalency is 5 hence its covalency is also 5 right so covalency 5 है बॉन्ड केला बने को 5 because covalency depends upon number of bonds or you can say number of bonds depends upon covalency if it is covalency is 5 then it can form 5 covalent bonds पांचटा बॉन्ड बने करियो पांचटा बॉन्ड देखो एग्जांपल्स देखो को मॉलिक्यूल फॉस्फोरस रे कोवेलेंसी होची 5 कोन अछि को कौन मॉलिक्यूल अछि जो मॉलिक्यूल रे फॉस्फोरस रे कोवेलेंसी 5 कोन करियो को हम देखि परिबा PCl5 राइट PCl5 ये यूज PCl5 जो फॉस्फोरस बने छन पांचटा बॉन्ड ओके अब कोन करियो S3PO4 नहीं करियो देखो S3PO4 रे फॉस्फोरस बने छन 5 bonds its basis it is 3 that means 3 OH atoms are present तीनटा OH अछि and one oxygen is double bonded to phosphorus which is 3PO3 S3PO4 this is H3PO4 और वो सब मॉलिक्यूल करियो जिनते फॉर एग्जांपल करियो S3PO3 देखो ये जी फॉस्फोरिक एसिड ये होची फॉस्फोरस एसिड ठीक अछि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड its basicity is 2 that means it contains two OH groups their structure is you can देखो phosphorus one OH another OH one hydrogen directly bonded to phosphorus and double bond O तो ये होची आपनकर S3PO3 और कोन करियो POCl3 phosphoride chloride POCl3 अपन एक पेपर पढ़थिले हेरोअल्केन जो माने ड्रॉपर बैचलर माने कहूची तो अपन सेकंड ईयर अपन 12th क्लास से पढ़ले प्रिपरेशन ऑफ हेरोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स माने छै तो सेठे में PCl5 से रिएक्शन करथिले तो PCl5 से रिएक्शन कला गडी ये बाई प्रोडक्ट आस्थिले alcohol upon treatment with PCl5 gives हेरोअल्केन plus POCl3 and plus HCl right ये था अपन
माने प्रोडक्ट्स होते तो सेठी जो POCl3 आसला यार स्ट्रक्चर केम थिला ये वाला फॉस्फोरस क्लोरीन 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 डबल बॉन्ड O ये था POCl3 यानी वो ची फॉस्फ्यूराइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉस्फ्यूराइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तो ये सब केस रे कोवेलेंसी होची 5 ठीक अछि तो कोवेलेंसी 5 माने मॉलिक्यूल पाखरे सेंट्रल एटम बनैथिबा 5टा बॉन्ड ठीक अछि यानी कि बिकॉज़ कोवेलेंसी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड ऊपर से डिपेंड करते ओके और you can say in the reverse way you can say number of bonds depends upon covalence यदि covalency 5 तो bond बनेगा से 5 ये सब bonds आने covalency 5 रे bond बनाते लेका phosphorus 3टा ही bond बनै परियो 5टा ही bond बनै परियो ଆଉ इलेक्ट्रॉन ही नांती एक्साइट करिया पे सेम सेल रे ଆଉ इलेक्ट्रॉन अछंती कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछंती इलेक्ट्रॉन एक्साइट करिया पे ଆଉ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं परियो ठीक अछि तो बस जेति कि हे गला एटा होता मैक्सिमम कोवेलेंसी के 5 phosphorus ର maximum covalence होची 5 maximum केते bond बनै परियो 5टा देन देखो ये था phosphorus अरे नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन नेक्स्ट एग्जांपल देखो नाइट्रोजन का नेक्स्ट देखिए हमें नाइट्रोजन केस इन केस ऑफ नाइट्रोजन its outermost cell electronic configuration is 2s2 2p3 ठीक देखो फास्फोरस होची थर्ड पीरियड एलिमेंट और नाइट्रोजन होची सेकंड पीरियड एलिमेंट इट्स in case of second period the principal quantum number is but 2 okay so 2s2 and 2p3 2s2 2p3 रे इना होची कोन राउंड स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छा देखो जदि ये सेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 अछि then its cell number is also 2 ये सेकंड सेल रे इलेक्ट्रॉन अछन तो सेकंड सेल रे किछि d ऑर्बिटल अछि कि वैकेंट d ऑर्बिटल जेंते हमें फास्फोरस केस देखुदिल गोटे 3d ऑर्बिटल का जे वैकेंट थिला अच्छा अछि यही कि नाइट्रोजन केस नहीं तो it is the ground state it is the ground state of nitrogen atom जेठी इलेक्ट्रॉन जदि हम देखिबा then ये होची electronic configuration and the total number of unpaired electrons present in its outermost shell is 3 and hence its covalency is also 3 covalency के बस 3 उसको एग्जांपल जानि छ NCl3 NH3 ठीक है एड़ा सब कोन एग्जांपल ले करियो मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन में कोवेलेंसी 3 NH3 NCl3 etc नाइट्रोजन नाइट्रोजन है पिरामिड गोटे लोन पेयर तीन बॉन्ड it is similar nitrogen chlorine 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 एटा एटा नंबर ऑफ बॉन्ड बने छी के तीनटा तो कोवेलेंसी के आछो डी 3 डेटा का केस रे कोवेलेंसी हो 3 ओके तबे एटा होची ग्राउंड स्टेट तो देखो is there any excited state possible for nitrogen and nitrogen by excited state possible की बुझिबो मतलब को नाइट्रोजन केस रे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हेतिबो की देखो मत लागु जे हेतिबो रीजन होचे कि एटी पे थर्ड सेल सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट अछि सेकंड सेल में किछि d ऑर्बिटल न थाते हमें जेतु जानि छथि फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ला त जानथिबे फर्स्ट सेल में केवल s ऑर्बिटल थांती सेकंड सेल में s and p ऑर्बिटल थर्ड सेल में s p and d ऑर्बिटल and fourth सेल में s p d and f ऑर्बिटल आंसर प्रेजेंट थांती ठीक है तो सेमिति देखिले सेकंड सेल में s and p ऑर्बिटल थांती d ऑर्बिटल थाई कि अथंती तो जदि वैकेंट ही नहीं जदि वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं तले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन वोंट बी विजिबल हे परिवा नहीं ओके तो आपण क्वेश्चन कम पछरियो आपण के रिगार्डिंग क्वेश्चन पछरियो PCl5 exists but NCl5 does not exist give reason why ये क्वेश्चन कम पछरियो आपण को PCl5 exist करूची exist what NCl5 does not
Why? What reason it होगा? ECL 5 कहीं की show करूँगी and NCL 5 कहीं की show करूँगी? What reason it होगा? देखो simple reason कि ECL 5 केस रे vacant d orbital अच्छी ସେଥିପାଇଁ electron excited ହେଇପାରୁଛି. In case of NCL 5 it is central atom की nitrogen atom case रे vacant d orbital नहीं. Therefore, electron excitation is not possible in case of nitrogen atom. ठीक है जी? अपन का आंसर आसो कौन? अपन लिखिए electron excitation is not possible in case of nitrogen atom. Electron excitation is not possible in case of nitrogen atom as due to absence of vacant d orbitals. Due to absence of vacant d orbital. ठीक है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का नाइट्रोजन कैसे पॉसिबल नहीं है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल जो डी ऑर्बिटल नहीं वैकेंट that is electron excitation won't be possible and not feasible. It is not feasible. Okay, बुझी पड़ने ना नहीं they are similar हम जब बचरा phosphorus हम कैसे हम देखुଛନ୍ତି phosphorus देखो ଆଉ ଗୋଟେ केस नहीं पचरे ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन पचरिବ सेम phosphorus केस रे ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे जेमति कि pH3 exist but pH5 does not exist. এটা ये exist करोनी pH5 exist करोनी but pH3 exist होची. Okay, तो pH3 exist होची but pH5 exist नहीं करोनी जेमति कि हमें देखुଛନ୍ତି PCl5 ये भी exist करूची रिजल्ट देखिले ये exist करूची but pH5 does not exist. रीजन कोन हेतु रीजन कोन हेतु अरे रीजन कोन हेतु pH5 exist करूनी but PCl5 exist करूची what could be the reason behind भावंतु देखो सिंपल कथा एटी अछि कि आपनकर क्लोरीन एटम ठीक अछि हम क्लोरीन आपनकर सफिशिएंट अमाउंट रो एनर्जी प्रोवाइड करे टू excite the electron of phosphorus. Phosphorus रो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन पई और phosphorus रो इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल लो d ऑर्बिटल को एक्साइट करिया पई जति कि अमाउंट रो एनर्जी रिक्वायरमेंट है सेति कि अमाउंट रो एनर्जी क्लोरीन प्रोवाइड करि पारे व्हेल हाइड्रोजन cannot provide that much of energy. हाइड्रोजन सेति कि एनर्जी प्रोवाइड करि पारे ठीक अछि. तो सेति पई इन केस ऑफ हाइड्रोजन it is not possible to excite electron from s orbital to d orbital. Phosphorus रो s orbital लो d orbital को electron excitation possible नहीं जेतेबेले सराउंडिंग एटम अछि हाइड्रोजन राइट बट क्लोरीन केस रे ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करि पारନ୍ତି एंड आउ अपन गोटे कथा कहि परिबे कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक as compared to हाइड्रोजन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहार अधिक थिबो से कोन करिवो इलेक्ट्रॉन को निजर पुल करिवो तो जे पेयरिंग ही करछन से इलेक्ट्रॉन को से आउटसाइड को पुल करि परिबो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करि परिबो ठीक अछि. बट हाइड्रोजन ता कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेले यार इलेक्ट्रॉन को पुल करिवार टेंडेंसी एटा अधिक नथियो एठी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन पॉसिबल नय इन केस ऑफ हाइड्रोजन और pH5 माने हाइड्रोजन केस रे हाइड्रोजन कैन नॉट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम s orbital to d orbital ये छै जोटा कि क्लोरीन करिसन एटा गोटे क्वेश्चन करियो. ओके नेक्स्ट एग्जांपल हो जी सल्फर सल्फर एटम the sulfur atom ro electron की outer most cell electronic configuration होची 3s2 3p4 3s2 3p4 फिर 3s2 3p4 हेले ये होची ground state electronic की configuration देखो and ground state रे यार इलेक्ट्रॉन माने अछंती थर्ड सेल रे and we know third cell contains another 3d orbital which is vacant in case of
तमें देखिले कि सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होचे 3s2 1 3p4 राइट। तो এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এন্ড এটি দেখন্তু ইলেকট্রন থার্ড সেল অছন্তি एंड যেতে থার্ড সেল ইলেকট্রন থান্তি সেতবেলে থার্ড সেল s p and d অরবিটাল প্রেজেন্ট থান্তি ঠিক আছে। তো এটি যেহেতু ইলেকট্রন p অরবিটাল রে সরি যাଉଛି তো আমি কই পারিবা कि d অরবিটাল এটি কমপ্লিটলি ভ্যাকেন্ট আছে রাইট। তো এটা হচ্ছে আপনাদের গ্রাউন্ড স্টেট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ফর সলফর एटम। तो सल्फर एटम रो ग्राउंड स्टेट रे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछंती data ठीक अछि एंड हेंस इट्स कोवेलेंसी इज आल्सो 2। तो सल्फर रो कोवेलेंसी केते अछि 2। यदि ग्राउंड स्टेट रे सल्फर पाखरे दीटा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछंती सल्फर रो कोवेलेंसी आसी 2। ओके देखो कोवेलेंसी 2 आसिले एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सब मॉलिक्यूल्स अछंती जोडी सल्फर बनौछ आपनकर दीटा बॉन्ड। तो कोवेलेंसी 2 माने नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी 2। ओके तो कौन कोन प्रयोग को H2S H2S से ना एटा data lone pair of sulfur atom and two hydrogen atoms data देखो two bond with two hydrogen atoms right। तो covalency 2 number of bond is also 2 ये उड़ी प्रयोग अब कौन प्रयोग को अब कौन प्रयोग SF2 SF2 molecule भी प्रयोग it is covalency 2 sulfur this one etc। देखो एक दीटा जगह केस रे कोवेलेंसी आसो केते कोवेलेंसी is 2 ये दीटा जगह मॉलिक्यूल केस रे कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। ओके तो ये थिला सल्फर रो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको नोट कर दियंतु अरे बुझी पड़तन ना नहीं तो ना बुझी पड़छन जणावे ठीक अछि और जे न जणावे के जणे अपन बुझी पड़ले न पड़ले आराम से ठीक अछि मजे मजे पानी पियंतु हाइड्रेट रहंतु नहीं पाठ पढंतु। then इसला आपनको सल्फर इन इज ग्राउंड स्टेट। तो जब हम देखिबा सल्फर देखो सल्फर केस रे नंबर ऑफ पेयर देखो केते इलेक्ट्रॉन पेयर अछि लोन पेयर ये गोटे दीटा दीटा लोन पेयर अछि हमें जदी एनर्जी प्रोवाइड करबा तो एठो फर्स्ट 3p ऑर्बिटल रो जो दीटा पेयर इलेक्ट्रॉन अछि देखि तो इलेक्ट्रॉन पेयर अछि एठो गोटे इलेक्ट्रॉन एटिक एक्साइट कर दियो ये सब ना यदि गोटे इलेक्ट्रॉन एटिक एक्साइट कर दियो तंते तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोन अछि देखो यस ये दीटा इलेक्ट्रॉन अछि 3s2 यस देखो 3p4 थिला गोटे इलेक्ट्रॉन पड़ी गला पहला कम 3p3 ये कोन अछि 3d1 it also electronic configuration in excited state of 1 जो जी फर्स्ट excited state of sulfur। ओके तो देखो तो इलेक्ट्रॉन configuration थी this one देखो number of unpaired electron कितने अछि excited state first excited state रे sulfur रे number of unpaired electron 4 right hence its covalency is also 4। तो covalency कितने अछि 4 तो मतलब को मॉलिक्यूल ले सल्फर रो कोवेलेंसी 4 दैट मींस सल्फर बॉन्ड बने 4 कौन कौन मॉलिक्यूल करियो कौन मॉलिक्यूल सो करियो जोडी सल्फर 4 बॉन्ड बनाते देखो न्यूमरस एग्जांपल अपन ले ये अंडर रे अपन चले एग्जांपल ले करियो करो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 एडा इट्स डबल बॉन्ड O Cl अगर सल्फर गोटे डबल बॉन्ड विथ वन ऑक्सीजन and two single bond with two chlorine atoms that means 4 bonds ठीक है steady covalence of sulfur will be 4। अब कहीं करियो को SO2 मॉलिक्यूल लिख रही हो ना अरे SO2 लिख रही हो ना SO2 केस रेड लिख रही हो गोटे लोन पेयर चारटा बॉन्ड ओके एंड अब का मॉलिक्यूल लिख रही हो जो सल्फर बॉन्ड बने हां SF4 लिख रही हो SF4 एडा which is SF4 and so on एमती बहुत मॉलिक्यूल लिख रही हो अच्छा ठीक है जो कि कोवेलेंसी ऑफ सल्फर विल बी 4 सल्फर कोवेलेंसी 4 थे वाला बहुत मॉलिक्यूल इनटू पॉसिबल ओके। तो ये होची सल्फर रो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखो सल्फर रो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम कौन पे लिखले लेकिन या पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल दैट मींस 3s रे आउ गोटे पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होछंती जो टू इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करि परियो फ्रॉम s to d आवे ओके। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रे p to d इलेक्ट्रॉन एक्साइट करथिले बटन देखियो हम s to d इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे दैट मींस इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट sulfur in its second excited state जब second excited state देखियो
ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ପେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି s ରେ ଏଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପୁଣି ଏଠିକି ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେବ ଏଠିକି ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେଲେ ତାର ଯୋଉ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗରେସନ ଆସିବ ଏଟା 3s2 ଥିଲା ଇଏ ହେଲା 3s1 ଇଏ ଯୋଉ 3p3 ଇଏ ଯୋଉ 3d1 ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଡ ହେଲା 2 ଓକେ ଏଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି excited state 2 excited state second ଓକେ ଏବେ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 the total number of unpaired electron is 6 the number of unpaired electron 6 and covalency is also 6 covalency is 6 number of unpaired electron is equal to its covalency yes or no तो covalency is 6 आसुची ताले मते एग्जांपल कोन किछ मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल ले सल्फर बनै 6टा the covalency depends upon number of bonds okay or you can say number of bonds depends upon covalency the covalency 6 तार number of bonds is 6टा बनै परियो तारे कोन सब एग्जांपल अछि सल्फर आइटम जो 6टा बॉन्ड बनै कोन बनै परियो को আমি চেইন एग्जांपल ले करियो देखो SF6 SF6 that means sulfur with with 6 fluorine atoms 6टा fluorine atoms से तो 6टा सिंगल बॉन्ड बनै सल्फर और कोन परियो SO3 परियो SO3 and sulfuric acid H2SO4 देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करे पे टोटली वेरीड होनी स्ट्रक्चर ड्रॉ करे पे टोटली वेरीड होनी थोड़ी मैं स्ट्रक्चर किंतु ड्रॉ करा मैं सीखा अपन ओके हाउ टू ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर तो मैंने कहा स्ट्रक्चर किंतु ड्रॉ करियो हमने अपन को पूरा बीट बाय बीट सब सीखा ठीक है सो नो नीड टू बी वरीड ठीक है तो ये होचे अपन सल्फर इन इट्स second excited state its covalence is 6 and these are the examples in which the covalence of sulfur is 6 okay इस molecule में sulfur covalence हो जाएगा 6 और ये molecule possible etc मतलब ये molecule different है तो molecule अपन का important है से molecule वर्क हो जाए ठीक है चल तो फिर करियो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन केस देखो ऑक्सीजन केस देखो तो ऑक्सीजन 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 ठीक है तो ऑक्सीजन जान पड़छ तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हमके हेल्प करते हम तो बंची जन का भाई ना केबे ओ तो मॉलिक्यूल में हां भाई देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होची outer most cell 2s2 2p4 2s2 2p4 देखा कि इलेक्ट्रॉन अच्छा सेकंड सेल and like nitrogen it is at the d orbital in the absence of vacant d orbital the electron excitation is not possible in this case also right right case रे electron excitation possible नहीं अपन देखिए it was the ground state electronic configuration ground state electronic configuration में यदि हमें देखिए यार कोवेलेंसी ठीक है number of unpaired electron is 2 and hence its covalence is also 2 so oxygen by covalence is 2 ठीक है तो बीटा जब कोवेलेंस आसीबो ताले कोन कोन सब मॉलिक्यूल लिखिरो जोटी सल्फर कोवेलेंस 2 सॉरी कोन सब मॉलिक्यूल हमें एग्जांपल नहीं करियो जोटी ऑक्सीजन में कोवेलेंस 2 देखो ये मैक्सिमम केस पे ऑक्सीजन में कोवेलेंस 2 और अपन कह देबे कि ऑलमोस्ट ऑल केस में 99% केस पे कोवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन इज 2 कोन एग्जांपल देखियो जैसे कि H2O वाटर ऑक्सीजन bonded with 2 hydrogen atoms okay how can you OF2 oxygen with 2 fluorine atoms hydrogen का डेटा लोन पे ठीक है तो केस रे ऑक्सीजन बने छन डेटा बॉन्ड ठीक है तो बुझो छ ना तो ये होचन अपन करो
covalency of oxygen. Covalency of oxygen is 2. And I was mentioned like nitrogen electron excitation is not possible in case of oxygen also. Oxygen case में भी electron excitation possible नहीं. ठीक है? तो नोट चाहिए अपन कर देंगे लिख देंगे in case of oxygen atom electron excitation is not possible due to absence of vacant d orbitals. In case of oxygen atom, electron excitation is not possible due to absence of vacant d orbital. तो ये रिगार्डिंग भी अपने क्वेश्चन पहुंच करियो अपने क्वेश्चन पहुंच रहियो जेमते कि SF4 SF6 एगुडा सब एग्जिस्ट करछन्ती एरा अपने क्वेश्चन हे करियो SF4 SF6 exist but OF4 OF6 do not exist. ठीक है एमाने एग्जिस्ट करूनांती why काहेकि रीजन होची एटा रीजन होची in case of oxygen atom electron excitation is not possible due to absence of vacant d orbital but in case of sulfur atom electron excitation is possible तो जोडी electron excitation माने possible ही करला सेठी covalence अधिक से covalence बॉडी का नंबर ऑफ बॉन्ड भी बॉडी करियो ठीक है but in case of oxygen it is not possible due to absence of vacant d orbitals अब नोट बने जंतु चलो ठीक देखो take another example और एग्जांपल ले क्लोरीन एटम देखो क्लोरीन एटम जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होचे PS2 3p5 the outermost cell electronic configuration for chlorine is PS2 3p5 और रेडियस देखो 3d रेडियस में ये खास सेल इलेक्ट्रॉन ଅଛି ମାନେ 3d डेफिनेटली ଅଛି तो 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ଅଛି केते 0 इलेक्ट्रॉन सेटिंग तक मेंशन करायनी देखो ये होची तरह ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि इलेक्ट्रॉन देखियो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल and d orbital there it is beta beta it is equal to right that means ଆପଣଙ୍କର unpaired electron ground state रे chlorine न थाए केतना गोटे तो दरेक गोटे से तर covalence केटा से तर 1 means ground state chlorine will have covalence 1 ये केवल covalence 1 रहेगा कर chlorine ground state the ground state chlorine will have covalence only 1 yes or no the ground state रे electronic sorry ground state रे chlorine रो covalence 1 रहेगा ठीक अछि मतलब कोन covalence 1 आसीओ I कौन एग्जांपल नहीं प्रियो को मॉलिक्यूल ले covalence of chlorine is 1 जेंते में कह HCl right जो गोटे बॉन्ड बने छै ओको नहीं करियो HOCl हाइड्रोक्लोरस एसिड ठीक अछि ये करियो एटसेट्रा जोटी गोटे बॉन्ड बने छै क्लोरीन सेडा होसन सबटी क्लोरीन रो covalence होछि 1 क्लियर इधर में देखो यदि तीनटा अनपेयर्ड तीनटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होछन तीनटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स अछि तो तीनटा इलेक्ट्रॉन पेयर अछि माने तीनटा लोन पेयर एठी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन भी पॉसिबल बिकॉज़ here there is a 3d orbital which is vacant but vacant 3d orbital present अछि सेम सेल भीतर electron excitation is possible in this case एठी जदि इलेक्ट्रॉन को एठो मानन तो 3p orbital रो गोटे इलेक्ट्रॉन को जदि एक्साइट करेबा हम 3d orbital ताले यार आसी फास्ट एक्साइटेड स्टेट रे देखो 3s remain unaffected जैसे 3s2 ठीक अछि तो जो 3p5 थिला गोटे इलेक्ट्रॉन रेट 3p5 रो असला अपन 3d orbital को ये जो 3p4 ये जो 3d1 राइट एडा the number of unpaired electron के तरह 3 that means covalency is 3 now what is the fast excited state 1 chlorine by fast excited state जो देखियो हम चेक करियो
The total number of unpaired electrons is 3, hence its covalency is also 3. Here covalency is 3. तो कौन कौन से गोटे मॉलिक्यूल एग्जांपल दियो जो कि क्लोरीन 3टा बॉन्ड बनिଛି देखिଛ के देखिଛ के पर्यंत केबे देखिଛ गोटे क्लोरीन 3टा बॉन्ड बनेगा देखिना अच्छा कंडीशन देखियो अच्छा कौन नंबर देखो in case of हम जो देखुछंती HClO2 molecule ये गोटे एग्जांपल नहीं पड़ेगा HClO2 जोटा हम कहउछंती हां क्लोरस एसिड HClO2 का क्लोरस एसिड HClO2 का स्ट्रक्चर हम देख लियो क्लोरीन बेसिसिटी होसी 1 OH और एसिड डबल बॉन्ड एटा होची HClO2 है ना HClO2 and here its covalency is 3. The covalency of chlorine is 3 in case of HClO2 or in case of chlorous acid. Okay? No, you check the chlorous acid. HClO2 is chlorous acid. अगर ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब हम इलेक्ट्रॉन को अगेन एक्साइट करेगा देखा होली दुईटा बॉन्ड तैयार छन ठीक है होली दुईटा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करि परिया छन यदि अदर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम 3p to 3d इटु अनंतु आ गोटे एटिक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हला ताले माने ओकन एक्साइटेड स्टेट 2 सेकंड पे कोन से देखा PS2 3p देखा चारटा थिला गोटे इलेक्ट्रॉन पुनी पड़ला एला 3p3 3d1 थिला आ गोटे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हेगला हेगला 3d2 एडा it is the number of unpaired electron is 5. The number of unpaired electron 5 meaning covalency is also 5. The covalency 5 meaning bond कितना बनेगा answer example दिया molecule ला हम example देखि परिबा सेंटे देखा HClO3 नेम होची क्लोरिक एसिड HClO3 नेम कोन क्लोरिक एसिड ठीक अछि HClO3 रे नेम होची क्लोरिक एसिड ई केस रे देखा क्लोरीन गोटे बॉन्ड बने थी डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन आउट अछि बॉन्ड एटा होछि HClO3 केस रे जने HClO3 देखिबा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स केते अछि 5 बॉन्ड अछि माने जेठी तो कोवेलेंसी केते अछि कोवेलेंसी इज 5 ठीक अछि तो ये होछि तरह सेकंड एक्साइटेड स्टेट सेंती थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखियो आ गोटे लोन पेयर अछि 3s ऑर्बिटल भी पेयर्ड अछि हम सेठु यदि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा PS रो एठु यदि इलेक्ट्रॉन का अगेन हम एक्साइट करबा एठी D को ताले थर्ड आसो कोन थर्ड एक्साइटेड स्टेट 3 कोन आसो देखो PS दीटा थिला गोटे इलेक्ट्रॉन पड़े वाला होला PS1 yes then 3p 3 yes 3d 3 एटा एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसो केते ये 3 3 6 3 plus 1 7 total number of unpaired electrons are 7 covalency is also 7 ठीक है ये अंडर एग्जांपल कौन से देखा अपन इधर ये फॉर क्लोरिक एसिड HClO4 एडा क्लोरीन गोटे OH ठीक है 1 OH डबल बॉन्ड O एक बॉन्ड बने 7 here the covalence of chlorine is 7 ठीक है सिर्फ क्लोरीन का कोवेलेंसी केते आसीबो 7 ठीक है अब बुझा पड़छ नै क्लोरीन का तीनटा लोन पेयर अछि and same cell or within the same cell there is a vacant d orbital so हम तीनटा जाक लोन पेयर को एक्साइट करि परिबा तो गोटे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्साइट करले सेला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अब गोटे सेकंड जदी लोन पेयर को एक्साइट करबो सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड लोन पेयर को एक्साइट करबो तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट जदी ग्राउंड स्टेट देखियो क्लोरीन रो covalency है 1 माने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रे इट्स covalency is how much 3 then second excited state रे 5 and third excited state रे it is 7 ठीक है तो covalency maximum covalency of chlorine can be 7 okay तो ये दूसरा एग्जांपल HClO4 नेम होची फॉर क्लोरिक एसिड देखो टोटल टेंशन होनी या ना कंटेन फॉर क्लोरिक एसिड या यार नेम कहीं की असला क्लोरिक एसिड प्रीवियसली कहीं क्लोरस कहीं हाइपोक्लोरस एला सब पढ़े हम स्पेसिफिक टॉपिक होची ऑक्सी एसिड and ऑक्सी एसिड पढ़ला बेले हम डिटेल से पढ़े ठीक है हाउ टू draw their structure and the structure can be जानिबा केते बेले cyclic linkage आसो केते बेले आपनकर peroxy linkage आसो
केतोळे x x लिंकेज आसो केतोळे x o x लिंकेज आसो समस्त टिप्स शिखेबी समस्त पई आपन को स्पेशल टिप्स शिखेबी अपन टोटल एवरीडे बनते स्ट्रक्चर आराम से ड्रॉ करेंगे ओके तो ये होचे आपनकर क्लोरीन केस रे कोवेलेंसी ओके the chlorine is just the second period element in C group chlorine chlorine condition देखो ये सी chlorine रे chlorine केस रे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको कहना 2s2 2p5 देखा एटीपी सेम कंडीशन सेकंड सेल रे वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है वैकेंट डी ऑर्बिटल जो एब्सेंट रहेगा सेटी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इम्पॉसिबल है ओके तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्लोरीन एटम जोटा कि क्लोरीन केस रे पॉसिबल तो ई केस में देखिबा एटा होसरा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो देखिबा फ्लोरीन नो एडियस लगे तो दीटा इलेक्ट्रॉन इथे दीटा इलेक्ट्रॉन इथे टू इलेक्ट्रॉन इथे गुड इलेक्ट्रॉन so total number of unpaired electron is 1 and hence its covalency is also 1 covalency के सूत्र 1 covalency के इसला ओके तो बॉन्ड बने परियो केवल गोटे अपन एग्जांपल नै परियो सेमती HF ठीक है देन HFO और HOF नै परियो HOF ठीक है एटसेट्रा ये सब कंडीशन है फ्लोरीन केते बॉन्ड बनै थांती फ्लोरीन केते बॉन्ड बनै थांती ये कंडीशन गोटे गोटे बॉन्ड बनै थांती ना तो फ्लोरीन सब कंडीशन में गोटे ही बॉन्ड बनै थांती बट अधिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं इन केस ऑफ फ्लोरीन सॉरी फ्लोरीन केस रे गोटे बॉन्ड रो अधिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल जो हम प्रीवियस ऑक्सीजन केस लिखितले ये भी सेटा एप्लीकेबल देखिए जते कोन कंपोजिशन पॉसिबल देखंतो एटी बजरिबो HClO2 HClO3 HClO4 एटा समस्त एग्जिस्ट करंती ठीक है बट HFO2 HFO3 HFO4 do not exist ये एग्जिस्ट करंती नहीं रीजन होचे सेम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फ्लोरीन केस है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल देयर जो कोवेलेंसी है सो लिमिटेड राइज है ओनली इन वन गोटे रे लिमिटेड राइज है तो ओनली गोटे ही बॉन्ड बने परियो फ्लोरीन बॉडी 7 बॉन्ड से बने परियो ठीक है तो ये जो कोन दिस इज ऑल अबाउट कोवेलेंसी एंड हाउ इट इन सम देखियो कोन ना कोवेलेंसी जो थांती इट इज हम कोई भी कहूंगा ना कि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये स्टार मार्क मार के लिख दियंतु covalency depends upon number of bonds ऊपर ये होची डिपेंडेंट ठीक है तो बुझियो छ नहीं नोट कर दियो जल्दी तब देखो नेक्स्ट पढ़िया में कौन मैक्सिमम कोवेलेंसी गोटे एटम रो मैक्सिमम कोवेलेंसी केते हितरी जब यार किछ फार्मूला अछंती से फार्मूला मन रखो इजीली इजो अपन चाहे इजीली कौन से एटम रो मैक्सिमम कोवेलेंसी काढी परिबे ठीक है मैक्सिमम कोवेलेंसी अपन चाहे डिटरमाइन करि परिबे किंतु देखंतो मैक्सिमम कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी यदि मैं एस ब्लॉक एलिमेंट देखु छांती एस ब्लॉक एलिमेंट राइट एस ब्लॉक एलिमेंट मानकर मैक्सिमम कोवेलेंसी केते हितरी मन रखि थांतु एमान को मैक्सिमम कोवेलेंसी फार्मूला होची ns इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस आउटर मोस्ट सेल रे जो s ऑर्बिटल में जेति इलेक्ट्रॉन थांती सेटा होता कोवेलेंसी जेमते कि मैं एग्जांपल निकरियो कोन मन को बोलते सोडियम मेटल सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आउटर मोस्ट सिलिकॉन है ps1 आउटर मोस्ट सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन से गोटे ये कोवेलेंसी is okay that was one and that is also maximum गोटे ही तर कोवेलेंसी है करियो सोडियम का मैक्सिमम कोवेलेंसी के करियो only one clear that was the formula for s block element देखो p block element देखियो
p block elements ମାନଙ୍କର maximum covalency କେମିତି କାଢିବ ତ ଏହାର maximum covalency formula ହେଉଛି ns electrons plus np electrons ns electrons plus np electrons ठीक ଅଛି देखो एटा कहाँ पे applicable नहे देखियो except second period element second period elements होना ପାଇଁ ये applicable नहे ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ଲୋରିନ ବୁଝି କଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ଲୋରିନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା applicable ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆପଣ ଏହାର एग्जांपल ଦେଇ ପାରିବେ ଯେମିତି କି एग्जांपल आपण को ଦେଖିବେ maximum covalence of phosphorus phosphorus रा outermost सेला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन है PS2 PP3 देखा S रा अछि केटा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस P रा अछि 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 + 5 केते 3 + 2 5 3 + 2 5 अरे सेती जणा छै ने एडिशन जणा नै ठीक अछि जॉय साइजन तो 2 + 3 के मिसला 5 रेडी को मैक्सिमम कोवेलेंसी फास्फोरस से दिलो 5 यदि सल्फर देखियो सल्फर 3s2 देन 3p4 एठी देखा ns + d इलेक्ट्रॉन np रे अछि चारटा इलेक्ट्रॉन मिसो के 6 यार मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 बुझियो ना अरे बुझि पछ तो मैक्सिमम कोवेलेंसी केते करियो 6 एटा होछि p ब्लॉक एलिमेंट होना तुम देखा जदि Cl s जगह Cl नवा क्लोरीन सेंटे से 3s2 pp5 देखा बीटा इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन फिर 7 हाइड्रोजन सना ପାଇଁ मैक्सिमम कोवेलेंसी केते 7 एक्सेप्ट क्लोरीन क्लोरीन को छाड़ देना ये थिला p ब्लॉक एलिमेंट मानक मैक्सिमम कोवेलेंसी देन d ब्लॉक एलिमेंट मानक maximum covalency for d block elements मानक maximum covalency केदा छको तो या ପାଇଁ फार्मूला होछि ns electrons plus n minus 1 d electrons ns electron plus n minus 1 d electrons सेटा एग्जांपल देखि करियो देखो Cu plus copper plus केस रे एरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से देखो argon 18 then 4s 1 4s 1 3d then sorry 4s 0 खाली कॉपर देखो 4s 1 3d then 4s 1 3d then 3d देखो ये गोटे इलेक्ट्रॉन शीट अछि ये होछि देखो ये 4 होछि n तो 3 कोन हो n minus 1 ये 4 तो करन होछि n तो 3 कोन आसो n minus 1 ए भीतर केतला इलेक्ट्रॉन छै तो मैक्सिमम कोवेलेंसी एने केदा छै देखो गोटे इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स केदा छै 11 तो मैक्सिमम कोवेलेंसी छै इथे केते 11 ऊपर पे केदा छै मैक्सिमम 11 है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी एंड क्रोमियम और आयरन हाउ कर एग्जांपल लेते हैं देखंते हो आयरन आयरन केस देखो कहां से आर्गन 18 4s2 it is 6 ठीक है तो देखो 6 plus 2 is 8 maximum covalency for iron is 8 तो देखो chromium सेरा से argon 18 4s1 35 31 plus 5 कितना चला 6 the maximum covalency for chromium is also 6 ठीक है so like this you can determine the maximum covalency for a particular atom but a particular atom the maximum covalency by using these methods use करके you can determine ठीक है तो ये थिला आपनकर covalency of different groups और this is maximum covalency for different atom का maximum covalency केमति कैलकुलेट करें देखा बेले बेले कोन क्वेश्चन पछरेबो अपने क्वेश्चन पछरो एंती what is the covalency of nitrogen atom in NH4 plus रे नाइट्रोजन नो कोवेलेंसी केते ठीक अछि एटा बाबू बेले बेले क्वेश्चन पछरबे NH4 plus रे ये होछि देखो ये होछि नाइट्रोजन and its hybridization is also sp3
hybridization कौन था sp3 hybrid था and चार्टा बॉन्ड बने I mean just pick up तुम कहले कि covalency depends upon number of bonds the number of bond it ଅଛି 4 then covalency केते আছে number of bond केते আছে 4 covalency is also 4 बुझे एटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड गोटे बनेछि बट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम काउंट करियो जेतु चारटा बॉन्ड अछि covalency will be 4 सेमति क्वेश्चन को पकेबा कंफ्यूज करे पे ठीक अछि तो विदाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाही ताहाले नाइट्रोजन में कोवेलेंसी होची 3 मैक्सिमम 3टा बॉन्ड बनेछि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल एठी जो चारटा बॉन्ड बनेछि तुम्हें माइंड क्वेश्चन आसलो बट एठी जो चारटा बॉन्ड बनेछि एठी आउ गोटे जो गोटे एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बनेछि दिस इज ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस इज a coordinate bond राइट तो जब ये चारटा बॉन्ड बनेछि कोवेलेंसी सो as it depends upon number of bonds यदि जिंस चलिए बाबी हेडिंग दियंतु ऑक्सीडेशन स्टेट write down oxidation state देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट क्लास में ठीक है